Hello, students. Welcome to Brilliant Mind. Today, we are going to start with the very basic topic of accounting, that is, its introduction and meaning. To start with, it's very important to understand what accounting is. So, I have enlisted a very basic definition that defines the whole accounting in just 10 to 15 words. So, let's start with it. Is the systematic process of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transactions and communicating the results to the users thereof. आप ये मत समझिए कि मैं सिर्फ इसको पढ़ते ही जाऊंगी, बट इसको पढ़ने और हाईलाइट करने की एक वजह है कि आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि कौन से वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग क्या है. दैट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, क्योंकि इसी से हमारी अकाउंटिंग की फाउंडेशन भी है और इसी को इलेबोरेट करके पूरी अकाउंटिंग बनती भी है. सो बिफोर गोइंग अहेड विद एक्सप्लेनिंग यू द टर्म्स recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting, I would firstly be focusing on explaining you what financial transactions means. So moving on to financial transactions, it is an agreement or a communication between a buyer and a seller to exchange goods, services or assets for payment. So it is very important for you to understand this word payment, क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बनाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड हैव द कंपोनेंट मनी. नाउ for you people to make you understand financial transaction है क्या, I have just enlisted one example here. So this example is Ramesh, a person A, deposited money in bank. Here, bank is the seller of the services and this person Ramesh is the buyer of services of bank. And how it is termed as a financial transaction, because it involves this monetary term where Ramesh is depositing money in बैंक. इन लेमैन लैंग्वेज और इन सिंपल वर्ड्स, जब भी किसी ट्रांजैक्शन या कोई ऐसा एग्रीमेंट होगा या कम्युनिकेशन होगा जिसमें एक one party is buyer, the other party is seller, and they are exchanging any kinds of good, service or asset, but that should involve any kind of money. Barter system does not include financial transaction. अगर रमेश अपने फ्रेंड सुरेश को गुड्स देके उससे एक्सचेंज में गुड्स में सपोज he is giving pulses to Suresh and getting goods in terms of sugar, that will never amount to a financial transactions. Finance वर्ड से हमें क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि मनी वर्ड को हमें यहाँ एरिया से लूज नहीं करना है. वी नीड टू राइट दिस वर्ड मनी वेरी इंपॉर्टेंटली while writing what financial transaction is. Now, if financial transaction is clear, I'll be moving ahead with explaining you the basic terms that comprises the meaning of accounting. The first one is recording. Recording in simple terms means to put something in written for future reference. किसी भी चीज़ को हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, इट मीन्स कि वी आर कीपिंग दिस फॉर आवर रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि यहाँ से हम इसका रेफर ले सकते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, व्हाट डज इट मीन कि बिजनेस अगर अपना कोई ट्रांजेक्शन करता है, सपोज बिजनेस इज बाइंग अ लैंड,
वेयर इट वुड कम फर्स्ट, इट वुड बी टर्म्ड एज रिकॉर्डिंग। हम इसको अकाउंट्स बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे एंड रिकॉर्डिंग का जो फॉर्मेट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसको अकाउंटिंग टर्म्स में कहते हैं जर्नल। द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और फ्रॉम वेयर द अकाउंटिंग स्टार्ट्स। It is very important to understand two words here. First one is business transactions and second one is financial character. Financial character को हम पहले ही समझ चुके हैं कि that it should involve money, then only it should be included or recorded. The second terms come as business transactions. सो अकाउंटिंग होती है बिजनेस परस्पेक्टिव से, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन बिजनेस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस हो. सपोज आई एम कमिंग विद टू एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन यू दिस कंसेप्ट. फर्स्ट वन इज राहुल, ऑनर of ABC company, purchased a building for own use. Rahul, owner of ABC company, purchased a machinery for business. सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सपोज राहुल ऑनर है, बट राहुल अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स वो बिजनेस नेचर की ना करके पर्सनल नेचर की करता है. सपोज इफ यू कैन सी हेयर, राहुल ने एक बिल्डिंग परचेज की बट फॉर ओन यूज. So this cannot be termed as a business transaction for ABC company. But if Rahul is purchasing something for business, then it would be termed as business transaction and it would be included in the recording books and it would be recorded in the accounts book of that particular business, means ABC company. So रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है, लाइक फॉर व्हाट इज द ओरिजिनल बुक ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स. सो इट इज जर्नल, जो हम पढ़ेंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग बिफोर गोइंग अहेड विद द प्रैक्टिकल वन. एंड बिजनेस परस्पेक्टिव से व्हाट इज द रिकॉर्ड बुक ऑफ अकाउंट्स. सो इट इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, that is journal. We would be studying about journal in very detail because यहाँ से हमारा accounting का practical start होता है. तो इसको नहीं समझेंगे तो we would be losing much to learn. So we would be coming up to that, but यहाँ पे basic foundation समझना कि why these terms are so heavy to be included in the meaning of accounting, that is very much important to understand. Now we are coming to the second highlighted point from the definition of accounting, that is classifying. So classifying in simple English terms means grouping together. इसमें हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं एक साथ on the basis of their nature और similarity. So what accounting or what classifying holds in terms of accounting is when we group the financial transactions that are recorded in journal at one place. तो इसको हम in terms of accounting, how we record that? We record it in ledgers. Now it's very important to get an idea of what ledger is. Ledger के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. It holds a very significant place after journal in accounting. But to give you a heads up of on what ledger is, these are the individual account heads. What does it mean with individual account heads? तो इसमें क्या होता है, ये individual head accounts होते हैं in which the transactions related to that account are posted or transferred from journal. So coming on to suppose हमारे account में एक person है राहुल, जिससे हम डील कर रहे हैं. राहुल से business is purchasing
and we are purchasing firstly on cash, then on credit. सो हमें ये ट्रांजेक्शन्स जर्नल में जब पोस्ट करेंगे तो इट वुड बी होल्डिंग इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, वन ट्रांजेक्शन ऑफ राहुल, another transaction of Rahul. But while we are grouping it into ledger, it will come under individual head account of राहुल. सारी ट्रांजेक्शन हमें राहुल के अकाउंट के अंदर मिलेगी, जो हमने चाहे Jan 1 को करी हो, हमने चाहे उसको Jan 15 को किया है, हमने उसको July 30 को किया है, if the accounting financial year is from 1st Jan to 31st March. Now comes the third highlighted point, summarizing. Summarizing in simple terms is putting something into the short form, and that is quite understandable. So in accounting terms also it's the same. It's presenting the classified data. The classified data that we have put it into the ledgers, we are presenting that data in a manner that is understandable. Now comes understandable to whom? Understandable to the users of accounting, who are going through that books, that must be understandable to them. बिकॉज जर्नल में एंट्रीज डाल के लेजर में उसको क्लासीफाई करने से अकाउंटिंग यूजर वुड नॉट अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग किस डायरेक्शन में जा रहा है. इज द फर्म गेनिंग और इज द कंपनी गेनिंग इन दैट ईयर और इट्स एट द लॉस पॉइंट. सो हमें उसको समराइज करके उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा. देन ओनली वी वुड बी गेटिंग दिस पॉइंट कि कंपनी का उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है. सो इस प्रेजेंटिंग फॉर्म को हम वी प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस further leads to the creation of two things, that is known as the financial statements or the final accounts of a company, that is trading and profit and loss account. Second one is balance sheet. I know that all these words are new to you, but this is what accounting is. This is the final statements that are presented to the internal and external users of accounting. That is why it is very important to summarize what we have done earlier, like journal and ledger. We would be taking up all these terms going ahead into the practical plus the theoretical portion also, but right now it's quite understandable that you should be understanding the meaning of it first. Next comes the very final point, that is communicating the results to the users thereof. यहाँ पे एक बहुत हाईलाइटेड वर्ड है यूजर्स. अब यूजर्स अकाउंटिंग के कैन बी इंटरनल और कैन बी external. We would be coming to that, but it is very important to understand कि हमें communicate results करने क्यों हैं. क्योंकि अगर हम कोई भी फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, बट वी आर कीपिंग इट विद आवरसेल्व्स, दैट विल नॉट बी मेकिंग एनी सेंस. In order to grab the investment from the market, in order to grab the loan, in order to enhance the customer base, at every point there is one thing that is very much important. People want to understand how sound you are in market. So how they would be knowing that? From your final accounts. So you need to communicate those results to the users of accounting, and that too timely. Now, as I mentioned, users of accounting are of two types, internal and external. Internal users are those who are internal to the company. Management, directors, CEO, employee, they all come under the internal users of a company or account. Next comes the external one. Externals are supplier,
कि जिसको मैं सामान दे रहा हूँ ऑन क्रेडिट वो मुझे रिफंड, मुझे पैसा दे भी पाएगा कि नहीं. क्रेडिटर्स, बैंक, investors. So it is very much important to communicate our financial accounts or our financial results or company's financial results to these users. Now, as we are done with covering all the highlighted words from our definition of accounting, it is very important कि हम उसको एक summarized form में पढ़ें कि हमने क्या समझा है. So, it's a systematic process recording in the form of journal, classifying in the form of ledgers, summarizing in the form of trial balance that leads to P&L and balance sheet, and then analyzing and interpreting those transactions and communicating the results to users, both external and internal. So there are few points, students, that are very highlighted and that you also need to mention while writing down your meaning and definition of accounting in exams. This is the standard definition that you can learn. Plus, also remember what a financial transaction is. I hope you liked the lecture. Don't forget to like, subscribe and join for more videos. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.